Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Tension continues to grip Manipur's Valley district as night-long protests intensify, with thousands of people taking to the streets in defiance of restrictions. A massive torch rally was held in Nongpok, Ketal Mambi in Imphal East, where large numbers of residents marched through the area, raising slogans and demanding action over the recent violence. Despite curfew measures, authorities have relaxed restrictions from 5 a.m. local time to 5 p.m. on April 14th, according to orders issued by the concerned district magistrates. However, mobile internet services remain suspended across affected areas, indicating the prevailing volatile situation. Educational institutions across the valley continue to remain shut since April 7 following the Tronglaubi incident, which triggered widespread unrest. The prolonged closure has disrupted academic activities, adding to public frustration. Protests have shown no signs of subsiding, with fresh reports of road blockades emerging from Moirang areas on April 13th, further affecting movement and normal life. The continuing demonstrations and restrictions underscore the fragile law and order situation in the state, even as authorities attempt to contain the unrest. Assam is celebrating this year's Rongali Bihu, also known as Bohag Bihu, with a deep sense of loss and subdued enthusiasm following the demise of cultural icon Zubin Garg. Revered as the voice of Bihu, his absence has transformed a vibrant festival into a period of remembrance, marking the first Bohag Bihu without him. Across the state, people of all ages, including children, youth and women, are continuing traditional celebrations with Bihu dance performances and Husori in various localities. However, many Bihu committees have either cancelled or scaled down musical events as a mark of respect. The festivities began today with Goru, also known as Guru Bihu, the first day of Rongali Bihu, dedicated to cattle. Rituals such as washing livestock, feeding them traditional greens like satsaki, and preparing for the Assamese New Year, Manu Bihu, on April 15th were observed with devotion. Meanwhile, the All Assam Students Union organized its traditional Mukoli Bihu at Judges Field in Guwahati on the occasion of Goru Bihu. Today begins the auspicious celebration of Bohag Bihu in Assam, and this very particular field where we are standing right now, this Judges Field Open Bihu session has a significant history. During the historic Assam movement, when repression was imposed on the people of Assam, when protest rallies were almost banned, all the Bihu committees of Guwahati locality, they marched together, and this was the beginning of this historic Bihu function that we are celebrating today. Of course, this Assamese New Year is different than the other New Years in previous years because we have lost our heartthrob Zubin Garg this time. In one hand, when we had been celebrating the birth centenary of Dr. Bhupen Hazarika, on the other hand, there is a strong sense of grief due to the demise of Zubin Garg. So it is a mixed feeling today. Despite all this, we'll have to celebrate Bihu. It is a cultural, so to say, base of the people of Assam and the Assamese lifeline. एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। जुबिंदा बिहीन हम लोग का कुछ नहीं है, वही सब था बोहाग बिहू के लिए। आज वो होता तो बहुत प्रोग्राम होता असम में, वो नहीं है तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग का मन एकदम अच्छा नहीं है, फिर भी असामीस के लिए हम लोग असामीस है, इसीलिए बिहू सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा ना, हम लोग का ये नियम है, इसीलिए आया है वही। और लेकिन मन अच्छा नहीं है एकदम। At this moment we don't have Zubin Garg.
So the feelings which is there in the minds of the Assamese people, you can really realize. With that saddened mind, we are assembling here to observe our Bihu festival. And here, this Jospil Bihu had a special, so to say, background. During Assam movement, it has started. And after signing of Assam Accord, it had gained a special momentum. The main ethos of the Bihu is to give more emphasis on the folk culture, because we have a rich folk culture. So here in the Bihu, we are giving more emphasis on the folk culture, so that the enriched folk culture of the Assamese indigenous people can be expanded. The Khasi Auto Society today organized a public meeting at Umsning in Riboy district to seek support from the public voice demand for grant the Khasi language the status of a quote-unquote official language. The meeting was addressed by prominent leaders of the KAS central body, including Professor D.R.L. Noklayat, President of KAS, and Dr. R.P. Karshing, General Secretary, along with other members. Speakers at the meeting, the leaders of KAS strongly emphasized the need to preserve and promote the Khasi language, describing it as an integral part of the identity and cultural heritage of the Khasi community. They also expressed that fulfilling this demand would strengthen the use of the Khasi language in government, administration, education and society at large. Bandai pengkemau hanai amsyu daga jingkho ngin kendo marhamat rengkat upajba rengkat kiseng bahalang baro kiseng teriman serobha baro ki bala jukersian yang nagada daw ni khat ye kiseng bahalang baro ni khat ye ki parari baro jong gabri unyotra nadu sabri lengam nadu mingi sedai sejantia wijantia lipnal sedo seti seri jat kilom kari khasi southwest kasels sedo seni sepang sete ikam jogeri boy ngin mir katsuk bat ngin let bandawan al sarkar pendang tin sarkar wador nama kiri dari ka subjek jong kajela kali kamat Rekam jong kejala himla banai dau bangin la bande ka constitution jong India kam kham man pendong tin sarkar ya kano ke judge bagi palba kata kejala ki kren nagada dau kom Tripura don't like the league official languages tin sarkar bahwa Tripura gidan ka Kokborok ka Bengali bat ka English ngin persya ya ke jingteng ya ke English namar ya kle jadureu hamrai ke bandengkong kale bandong kaktien khasi kebar kaktin omei haki puar badangkam lani tangi kam badangkam mentangan phaino. Today, on the occasion of Goru Bihu, a festive atmosphere was seen among the Assamese students at the National Institute of Technology, Silchar campus. In the campus premises, the students baited the cows using gourd, brinjal and turmeric, cleaned and washed them, and prayed for the welfare and prosperity of the cattle. Following the tradition of every year, this year too, the Assamese students of NIT Silchar observed Goru Bihu by strictly following all traditional Assamese customs and rituals. ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ যি অসমৰ যি আয়ুস ৰেখা বাপতি সাহন বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আপোনালোকে দেখিছে যে আমি প্ৰত্যেক বছৰে NIT শিলচৰৰ বাকৰিত আমাৰ যি পৰম্পৰা বহাগ বিহু উদযাপন কৰি আহিছো কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যবশত দুদিন আগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু পল্লৱ দাস ছাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আমাক এৰি পৰলোক প্ৰাপ্তি হ'ল গতিকে এইবাৰ অলপ উৎসাহটো অকণমান কম যদিও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ সাধ্য অনুসৰে অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও আমি আজি ইয়াত গৰু বিহু উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আমি
NIT শিলচৰৰ আৱাসত থাকোঁ, আমাৰ কাৰণে সকলোবোৰ বস্তু সহজতে পোৱাটো অকণমান অসুবিধা হয়। তথাপি আমি আমাৰ ওচৰৰ যি গাঁৱৰ পৰা গৰু আনিছোঁ, লগতে ইয়াত মাহ, হালধি, লাও, বেঙেনা আদি যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াত আমাৰ যি পৰম্পৰা, গৰু বিহুৰ যি পৰম্পৰা, গৰুক গা ধোৱা, চাকি দিয়া, আৰু তেনেকৈ আমি এইবাৰ বহাগ বিহু উদযাপন কৰিম। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যিহেতু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান, গতিকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আছে, শিক্ষাগুৰুসকল ইয়াত আছে। গতিকে আমাৰ অসমৰ যি চহকী সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিটো ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰাটো আমাৰ এক প্ৰধান কৰ্তব্য। লগতে এই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাই আছোঁ। গতিকে শেষত পুনৰ বহাগ বিহুৰ ওলগ আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। In a disturbing incident, the body of an unidentified woman was recovered from the outskirts of Molvapai village under Saikot subdivision late Monday night, raising concerns over possible foul play. Police sources said the information was received at around 11:30 p.m. on April 13 from the secretary of Molvapai village authority, following which a police team rushed to the location. Upon arrival, the team found a body lying in a deserted area. An inquest was conducted on the spot after completing all procedural formalities in the presence of relevant authorities. A case has been registered and the district magistrate Churachandpur has been informed, while an executive magistrate has been requested to oversee the inquest proceedings. The body has been shifted to the district hospital morgue, Churachandpur, for post-mortem examination to ascertain the exact cause of death. Police have initiated further investigation to establish the identity of the deceased and the circumstances leading to her death. In a major political development in Bihar, Bharatiya Janata Party leader Samrat Chaudhary is set to take oath as the state's new chief minister at 11 a.m. on Wednesday. This comes after he was elected as the BJP's legislative party leader following the resignation of Nitish Kumar as the chief minister. Chaudhary's elevation carries historic significance as he will become the first chief minister from the BJP in Bihar. The party, which has been a key player in the state's coalition politics for years, is now set to lead the government independently. Chaudhary's name as the BJP legislative party leader in Bihar was proposed by Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha and seconded by MLAs Renu Devi, Mangal Pandey and Dilip Jaiswal. The formal announcement was made by Shivraj Singh Chauhan, who attended the NDA meeting as a central observer. और विधायक बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और इसलिए विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। सम्राट जी बिहार, सम्राट जी
The 57-year-old Chaudhary, who was Nitish Kumar's deputy, belongs to the Koiri as Kushwaha caste, a prominent other backward class community in the state. Among the backward castes, the Kushwaha community is the largest after the Yadavs. According to sources, the Nitish Kumar's JDU had asked the BJP to appoint a chief minister from this very caste group. Chaudhary, who entered active politics in 1990, has pulled many a switcheroo from Lalu Yadav's RJD to Nitish JDU to finally joining the BJP in 2017. Union Minister Sarbananda Sonowal on Tuesday joined the rest of the people in Assam to celebrate Goru Bihu on the first day of Bohag Bihu. Speaking to media persons, he said it was a tradition and is very important because the traditions that are established in Assamese society must be followed. He further said by following the tradition, one can strengthen the social systems and teach them to new generation. हाँ, ये तो परंपरा है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी असमिया समाज व्यवस्था में जो परंपरा प्रतिष्ठित है उसको पालन करना ही होगा क्योंकि ये पालन करने से हमारे समाज व्यवस्था को मजबूत हम बना सकते हैं, नई पीढ़ियों को भी सिखा सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है जिससे लेकर हम असमिया समाज आज 21वीं शादी में भी अपने बड़ी गौरवशाली एक माहौल में अपने आप को सजाने का काम की है। तो हमारे समाज का जो भी विशेषता है, इस विशेषता को सबको समझना होगा, दुनिया को भी समझना होगा। असम बहुत खूबसूरत एक प्रदेश है और इसमें असमिया समाज बहुत कलरफुल सांस्कृतिक धाराओं से प्रतिष्ठित एक समाज है। इस समाज का जो इंसानियत का भावना शक्ति है यह अमूल्य है। तो इसलिए मैं मानता हूँ हमारे ग्रामीण जीवन में जो भी हम परंपरा बिहू में खास करके हमारे बहाग बिहू, रंगाली बिहू भी कहा जाता है, इसमें सब लोगों ने अपने माता पिता की चरणों में से झुका के साल भर के लिए आशीर्वाद लेती है और ऐसे ही समाज को हमेशा एकत्रित करके हमारे मूल्यों को आधारित समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं आप आज इस अवसर पर आज गुरु बिहू कहा जाता है, तो गौ माता के चरणों में समर्पित भावनाओं से उनको नहा के हम प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कल मानु बिहू है। तो उसके बाद हमारे परंपरा जो है कल बुजुर्गों का चरणों पे, माता पिता के चरणों पे हम फिर से समाज के चरणों पे हम सिर झुका के आशीर्वाद लेंगे। और ये आज सारे स्टेट में इस परंपराओं को आज विशेष रूप से पालन की गई है। India is likely to see below normal monsoon rains this year, the Indian Meteorological Department said on Monday. The 2026 Southwest Monsoon seasonal June to September rainfall over the country as a whole is most likely to be below normal, which is 95 to 90% of the long period average. Quantitatively, the seasonal rainfall over the country as a whole is likely to be 92% of LPA. The LPA of the seasonal rainfall over the country as a whole, based on the period of 1971 to 2020, is 87 centimeter. So, as per the Indian Meteorological Department, normal rainfall is defined as between 96% and 104% of 50-year average of 87 centimeter for the 4-month season. पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किए हैं। इसके हिसाब से पूरी देश का मानसून सीजन का रेनफॉल देखें वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है और मात्रात्मक रूप से देखें तो
सामान्यतः जितना बारिश होता है वो कि लगभग 87 सेंटीमीटर है, इसका 92% ±5% होने का संभावना दिखाई दे रहा है। और देश का विभिन्न प्रांत की बात करें तो लगभग मैनी प्लेसेस में रेनफॉल बिलो नॉर्मल रहने का संभावना है, सिवाय नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुला इंडिया के कुछ इलाका जहां नॉर्मल नहीं तो नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। ये जो पूर्वानुमान आज जारी किए हैं ये सभी तरीके का लार्ज स्केल प्रोसेस हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल और डायनामिकल मॉडल को आधार करके दिया गया है। जो लार्ज स्केल प्रोसेस है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जून तक ऐसे न्यूट्रल कंडीशन रहेगा। इसके बाद इक्वेटोरियल पैसिफिक में एल नीनो कंडीशन डेवलप होने का संभावना है। हमारा इंडियन ओशन में भी जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, वो न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा टुवर्ड्स एंड ऑफ मानसून सीजन, नहीं तो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो सकता है जो हमारे मानसून सीजन के लिए अच्छा है। जो यूरेशियन स्नो कवर नहीं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक स्नो कवर का एरिया है जनवरी से मार्च के दौरान वो सामान्य से कम रहा है। जब स्नो कवर एरिया सामान्य से कम रहता है जनवरी से मार्च, इसका रिलेशन आने वाले मानसून सीजन के साथ अपोजिट होता है, यानी सामान्य से कम स्नो कवर एरिया होगा तो रेनफॉल अच्छा हो सकता है। इसलिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है मानसून सीजन के लिए। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.